Hello and good morning to all my dear students. I welcome you once again in the class of accounts, standard 11th. Today we will go through with the last question of your chapter number 10, trial balance, and the question number is 7. In our last video, we have seen that trial balance prepared by Vallabh was mathematically correct, but conceptually, as per the rules of debit and credit, it was not correct. But in question number 7, the trial balance prepared by Paresh Kumar doesn't get tallied. That means वो mathematically भी wrong है, along with that concept wise as per the rules of debit and credit Paresh Kumar ka trial balance wrong hai. It is incorrect. So let us proceed with question number 7. Coming on to question number 7 on page number 262. The trial balance of Shri Paresh Kumar as on 31/3/2016 shows a difference in the total of debit and credit balances, certain errors, and prepare a modified trial balance. Question number 6, which we did in our last video, was mathematically correct but conceptually wrong. Now this Paresh Kumar has prepared trial balance, but the difference is there in both debit and credit balances. Even the mathematically it is wrong, and there may be difference in their concept wise. That's why there is the error. It is not totaling. आपका conceptually and mathematically trial balance should be correct. Now this is the trial balance in the form of statement. Name of account is there, ledger folio number is there, debit balance rupees and credit balance in rupees. This is the form of statement. हमें इसमें से जहां जहां पर मिस्टेक्स आ रही हैं उसे उन एरर्स को हमें डिटेक्ट करना है एंड हमें एक करेक्ट मॉडिफाइड ट्रायल बैलेंस फॉर परेश कुमार प्रिपेयर करना है, विच शुड बी बोथ मैथमेटिकली एंड कंसेप्चुअली करेक्ट. नाउ फर्स्ट इज capital. So capital will be on credit side, which Paresh Kumar has done wrong. It is on the debit side in trial balance. Next is stock of goods. Stock of goods is correct. How much it is? 9,000. Next is purchase. Purchased goods comes into the business. It should not be credit. It should be debit. Purchase 90,000. Next is sales. Sales goods goes out. Credit होना चाहिए. इन्होंने गलत कर दिया है. We will correct it. Sales 96,000. Now next is goods return debit. Now I'll give you one clue how to check whether this is correct or not. Now हमें क्या करना होगा, ये जो return word है उसे for a few seconds उसे hide करना होगा. Just I'm showing you how you will check it. Goods debit. कौन से goods debit होते हैं? परचेज वाले. ओके, परचेज वाले गुड्स को ही अपन डेबिट करते हैं. यहां पे ही अपन ने देखा था परचेज में. ओके, नाउ अभी अपन को पता चल गया कि गुड्स डेबिट कौन से वाले होते हैं? परचेज वाले. नाउ इफ वी विल ओपन दिस, व्हाट इट शोज? रिटर्न. यानी ये कौन से गुड्स हैं? परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न मीन्स गुड्स गोज आउट. ये 1200 यहां पर नहीं, क्रेडिट में आना चाहिए था. दिस इज रॉन्ग. अंडरस्टूड? अगेन गुड्स क्रेडिट. कौन से गुड्स क्रेडिट होते हैं? द गुड्स विच वी सेल. अब वापस से इस रिटर्न को हटा देंगे. सेल्स रिटर्न हो गया. सेल्स रिटर्न मीन्स गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस,
this 6,000 should come on the debit side. So the first one was purchase return, credit side. Next one was sales return, debit side. Both these are wrong. So sales return on debit side with 6,000, purchase return on credit side with 1,200. Moving further is wages and salaries. Wages and salaries 11,400, which is correct. Administrative advertisement expense, which is also correct, 2,580. Next is rent paid, आपने भरा है, खर्चा है, which is on the credit side for परेश कुमार, but we will correct it. वो कहाँ आना चाहिए? Debit side में आना चाहिए. Moving further, next is our bad debts. Bad debts is loss for business, so debit all losses as per the rule. हमने इसको डेबिट कर दिया. Next, building. Building is our asset, so building should always have its debit side, 42,600. Next are creditors. Creditors should have their credit nature. हमें फ्यूचर में उन्हें पेमेंट करना होगा. लायबिलिटी है हमारी. डेटर्स, हमें फ्यूचर में उनसे पैसा मिलने वाला होता है. These are receivables for us, so debit side. Next is general reserve. It should have the credit nature. It is on the debit side, which is wrong. By creating any sort of reserve, our profits decreases. अगर हमारा profit decrease होता है तो हमें उसको क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा. नेक्स्ट इज अवर इनकम टैक्स. इनकम टैक्स यहाँ पे क्रेडिट हो गया है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. वी विल राइट इट ऑन द करेक्ट साइड, विच इज डेबिट साइड. इनकम टैक्स विथ 1,800. मूविंग फर्दर इज अवर बैंक बैलेंस. बैंक बैलेंस करेक्ट है. डेबिट साइड. अमाउंट इज 2,820. Next is dividend. Dividend we have received, so this is also correct. On the credit side it is dividend of 5,000. जहां पे आपने शेयर्स का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहां से आपको जो डिविडेंड रिसीव हुआ है, दैट इज इनकम फॉर यू. नेक्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट. कमीशन रिसीव्ड इज ऑफ 10,000, so it should also have its credit nature. Commission received of 10,000. Bills receivable, हमें क्या होगा? फ्यूचर में इसमें से पैसा मिलेगा. These are receivables. These are assets for us. So bills receivables are of 15,000. Now complete trial balance of Paresh Kumar we have gone through. Now it's the time for doing the totaling. Total on both the sides is now correct. Mathematically is also correct, 1,92,600. and even conceptually जहां जहां पे मिस्टेक था वो भी हमने करेक्ट कर लिया है. ओके, हमको एरर्स भी शो करने हैं. वापस से हम वही करेंगे जो भी यहां पर टेक्स्ट बुक में आपका रॉन्ग है. दैट मीन्स ऑन डेबिट साइड जो नहीं आने चाहिए थे और जो आने चाहिए थे उन्हें अपन टिक मार्क्स लगाते जाएंगे. कैपिटल डेबिट नहीं क्रेडिट होता है. स्टॉक ऑफ गुड्स इज करेक्ट. परचेज हमारा डेबिट होता है, क्रेडिट है. सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, डेबिट शो किया है. गुड्स रिटर्न डेबिट, गुड रिटर्न क्रेडिट, ये भी गलत है. वेजेस एंड सैलरी इज करेक्ट. एडवर्टीजमेंट इज करेक्ट. रेंट पेड, बैड डेट्स इज ओके. बिल्डिंग, क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिट साइड जाते हैं. डेटर्स आर ऑल्सो रॉन्ग. जर्नल रिजर्व ऑफ 5,400 is also wrong. Income tax is also wrong. Bank balance correct. Dividend, commission received. Bills receivable received. Bills receivables are also correct. Now इन सब के लिए अपन को रीजन मेंशन करना पड़ेगा. Now
रीजंस हमें मेंशन करने हैं. कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड. इन परचेज गुड्स कम्स इन सो डेबिट. इन सेल्स गुड्स गोज आउट सो क्रेडिट. इन परचेज रिटर्न गुड्स गोज आउट सो क्रेडिट. इन सेल्स रिटर्न हमने जो गुड्स बेचे थे वो वापस आए हैं. दैट्स वाई गुड्स कम्स इन सो इट इज टू बी डेबिटेड. Debit what comes in. Rent paid as per our nominal rule. Debit all expenses, so debited. Creditors are our liabilities, हमें फ्यूचर में पे करना होगा, so credited. Debtors we receive from those debtors, so these are considered as our assets, our receivables, so debited. General reserve decreases our profit, so credited. Income tax is treated as our drawings, so it is to be debited. Now students, in your homework today, question number 7 which I have explained you right now, along with that illustration number 5. I hope you have understood how we prepare trial balance from the given accounts. Thank you and have a nice day.